Hello, hi, my dear students. Welcome to the new lecture of exercise 12.2, that is part 2 of exercise 12.2. But before writing the rest of the sums of this exercise, let's study few properties related with the triangle. Okay, and here the first property that we are going to study is what? ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है अब वो हम समझते हैं. देखिए एक्सक्यूज मी, यहाँ पर 3 ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 3. ओके, what you have to do, you have to measure the length of each side of the triangle, and here one table is given that you have to complete that. Means first we will see triangle 1. In this triangle 1 you have to measure all the sides of the triangle. Then in triangle 2 again you can see the length of the sides are not same, so again you will measure, and again in triangle 3 also you have to measure the length of each side of the triangle, and you have to complete the table. Now see children, when you will measure the length of the triangles with the scale, you have to write here sides of triangle ABC. AB, this is for the first triangle you will write here, then for the second triangle you will write here, and for the third triangle. After that you have to compute this, means you have to find out AB plus BC, मतलब ये साइड और ये साइड को आप प्लस करेंगे. ओके, जो मिलेगा वो लिखना है. नाउ फॉर द फर्स्ट वन अगेन BC एंड CA, ये और ये साइड को प्लस करके जो आ रहा वो लिखेंगे, एंड CA प्लस AB, CA प्लस AB. In this way for the second triangle, for the third triangle. Now what you will observe after completing this table, that we will observe that AB plus BC is greater than CA. Means sum of these two sides in the first triangle, sum of AB and BC is always greater than the third side. Okay, and again you can observe sum of the rest of the two sides, means different two sides you will take now. अब अगर हम BC और CA की साइड्स को प्लस करते हैं, BC और CA प्लस कर रहे हैं, तो इट शुड बी ग्रेटर दैन AB, ये हमको मिलेगा. अब CA प्लस AB अगर हम प्लस कर रहे हैं CA और AB, तो इट शुड बी ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन व्हाट? BC. सो व्हाट वी आर गेटिंग दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. किसी भी दो साइड्स की लेंथ को ट्रायंगल की प्लस करते हैं, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. एंड दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी. इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी. एंड यू नो चिल्ड्रन, इसमें एक ये भी बात होती है कि इफ़ वी मेजर द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, what you will find that the angle opposite to the largest side is largest. Means let me show you here by drawing a rough figure. Suppose this is any triangle ABC, okay, and here it is suppose here this is 60, this is 40, and 60 plus 40, and this will be 80, suppose. Okay, now what is the largest angle here? Angle 80. So what we are getting from this, that the side opposite to largest angle is greater. So what we got? Angle opposite to the, suppose this is any figure, triangle ABC. Let's see this property. Suppose AB is 8 सेंटीमीटर, AC आपका 6 है और BC 4 सेंटीमीटर है. तो जो ग्रेटेस्ट साइड है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट साइड हियर? 8. तो व्हाट इज द एंगल अपोजिट टू दिस? एंगल C आ रहा है. सो व्हाट वी फाइंड दैट एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट, एंड सिमिलरली एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड इज smallest. Okay, so what is another important property we are getting? The difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of the third side. Okay, so remember this also, that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. This is called as triangle inequality property. And this also, that the difference between the length of any two sides of a triangle is smaller than the length of the third side.
एंड दिस वे यू कैन प्रूव बाय दिस एग्जाम्पल ऑल्सो. देखो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड. सपोज मैं 8/6 कर रही हूँ, तो वॉट आई एम गेटिंग 8/6 इज 2 and this 2 is what is smaller than the third side, that is what 4. So in this way this property is proved, and learn these properties. Now let's move to the next topic. Now see what is mean by medians of a triangle. Very easy. A segment which is joining from the vertex to the midpoint of the opposite side is called as median of the triangle. अब देखिए, this is triangle ABC. A, B and C are the vertices of the triangle. अब मान लो हमने A से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया विच इज अपोजिट टू द मिड पॉइंट होना चाहिए. सो हियर D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C. अगर D इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C है, इट मीन्स दिस साइड and this side is always equal, means BD equal to CD. So what is median? Median is a line segment which is joining the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side. It's called median. Similarly you can see, let's see the vertex B. What is the opposite side of B? AC, and E is the midpoint of AC. So see, B is also a median. Here CF is also a median. So in this way AD, BE and CF, these all are the medians of the triangle ABC. Now let's study one more property, one more topic. You can say altitude of a triangle. Altitude means what? Altitude means height. Height means which height? The altitude is the shortest distance from the vertex to the opposite side, and the shortest distance is what? The perpendicular distance. You can see here one triangle is there, triangle ABC. Here all the vertices, altitudes are here drawn. Okay, heights are drawn here, but what is the shortest one? The shortest is what? AF. So AF is the shortest distance from the vertex to the opposite side, or this AF is also what? Perpendicular. You see, this is perpendicular. This symbol shows that there is an altitude, or you can say perpendicular. Okay, so here the height is given by the line segment that starts from A and comes straight down to BC, and this AF is perpendicular to BC. So a perpendicular drawn from any vertex to its opposite side. इसका मतलब जो perpendicular draw किया है, the shortest distance to the opposite side is called an altitude of the triangle. Now see here, in from each vertex how many perpendiculars you can draw? You can draw 3 perpendiculars. जैसे यहाँ AD is perpendicular to BC, CBE is perpendicular on AC, CF is perpendicular on the side AB. Okay, so the maximum number of altitudes, ज़्यादा से ज़्यादा कितने altitudes draw कर सकते हैं in one triangle? 3 altitudes. Okay. Let's see again two special triangles, equilateral triangle and isosceles triangle. Now a triangle in which all the 3 sides are of equal in length is called as equilateral triangle. Everyone knows this. Okay, so here this you can see AB, BC, AC. This symbol shows that all the sides are equal. And also we can define an equilateral triangle as a triangle having 3 equal angles. You can see here, what is the measure of this angle? A 60, measure of angle B 60 and 60. And since the sum of the measure of all the angles of a triangle is 180, then each angle will be what? Each angle of equilateral triangle will be 60 degree. Okay, so when all the angles of a triangle are equal, then also the triangle is what? Equilateral. So just you have to remember, if 3 sides of a triangle are equal, then the 3 angles are also equal. This you remember. So remember this point. If 3 sides of a triangle are equal, the 3 angles are also equal. ये याद रखिए. अब देखते हैं isosceles. This I already explained you, but let's see again.
A triangle in which two sides are of equal length is called an isosceles triangle. यहाँ पर ये side और ये side equal है, so it is isosceles triangle. And one more important property what you are getting, that if the two sides of a triangle are equal, then the angles opposite to them are also equal. अगर AB और ये AC equal है, तो what is the angle opposite to AB? AB के opposite में ये angle है. What is the angle opposite to AC? C. It means angle B is also equal to angle C. So हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? If AB is equal to AC, then angle B is also equals to angle C. Okay. So what you have to remember, if two sides of a triangle are equal, then the angles opposite to them are also equal. Okay. Now let's move to the examples of exercise 12.2, question number 6. Now see question number 6. The length of two sides of a triangle are 6 centimeter and 8 centimeter. Now you have to write between which two numbers can the length of the third side fall. यानी कि किन दो नंबर्स के बीच में the length of the third side will be there. Okay. Now we know children कि sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल, अभी हमने आप पढ़ा है. देयरफॉर द थर्ड साइड शुड बी लेस देन 14, क्योंकि प्रॉपर्टी के अनुसार क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड, दो साइड हमको दी है, इन दोनों का सम अगर 14 है तो थर्ड साइड शुड बी लेस देन 14. ओके. नाउ दिस थर्ड साइड शुड बी more than the difference of these two side. ये लेस देन 14 होना चाहिए और मोर देन कैसा होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस है. मीन्स 8 minus 6 is equal to what? 2. Now let us verify this. इसको वेरीफाई करते हैं. Suppose if we take third side लेस देन और इक्वल टू 2, हमने क्या बताया कि थर्ड साइड शुड बी मोर देन 2 से बड़ी होना चाहिए. अगर मान लो हम 2 से छोटी और इक्वल टू 2 लेते हैं तो क्या होता है? हाँ, और इट इम्प्लाइज दैट हम ले रहे हैं इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. सो यू सी 8 + 6 जो हमारे पास दी है, इट इज़ ग्रेटर देन 2. ठीक है. अब मैं 8 + 2 कर रही हूँ तो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट इज 6. But if I am taking 6 and 2, third side, third sum of two sides, 6 + 2, 6 + 2 is what? 8. Now this 6 + 2, is it greater than 8? No, it is not greater than 8. Okay, 6 + 2 is equal to 8 we are getting, and what the property says, sums of any two sides should be greater than the third side. तो 6 + 2 ये है जो greater than 8 नहीं आ रही है, is not greater than 2. So that's why what will be the answer now? Hence what we are getting, the length of the third side should be any length, it should be greater than 2 centimeter as we have seen here, and it should be less than 14 centimeter. Okay, so let's move to the next example. Now see question number 7 we are seeing now. Okay, question is it possible to have a triangle with the following sides? सो मतलब कहने का है कि जो साइड्स आपको ट्रायंगल की दी है, इससे क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं. ओके. एंड फॉर ऑल दिस एग्जांपल्स यू हैव टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ ए ट्रायंगल, कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ये कहाँ कहाँ पॉसिबल है? जहाँ ये पॉसिबल होगा वहीं पर ट्रायंगल की साइड्स करेक्ट है, यस है. ओके. नाउ सी फर्स्ट इज 6 centimeter, 3 centimeter एंड 2 centimeter. So let's use the property of inequality of a triangle. तो सबसे पहले मैं लूँगी 6 + 3, सपोज 6 + 3 ले रहे हैं. So 6 + 3 is greater than 2. Yes, 6 + 3 is 9 ना, it is greater than 2. Now let's take second one. Second is suppose 6 + 2. 6 + 2 is 8. That is also greater than the third side. That is 3 centimeter. Okay. Now I am taking 3 + 2. 3 + 2 is what? 5. And 3 + 2 is 5. Is this 5 greater than 6? No, 5 is not greater than 6. So the sum here you can see the condition is not satisfies. Therefore what?
we will write in this way. So in this way we will write no, here the triangle is not possible with the given sides. Now second sum you can do. Here the answer is yes. If you will write in this way, you will get the answer. Okay, that here the triangle is possible. Now let me take third example for you. Third is the sides given to you 10.2 centimeter, 5.8 centimeter, 4.5 centimeter. Now let's use the property of inequality of a triangle. अब पहले हम इस दो साइड्स का एडिशन लेते हैं 10.2 plus 5.8. Now see the rough work. Let's add this 10.2 and 5.8. क्या मिल रहा है आपको इन दोनों को प्लस करने पे 16. Now 16 is greater than the third side. Yes. What is the third side? 4.5. Now let's see second one. 10.2 plus 4.5 we will take. Okay, now when you add these two, this sum of these two side is also greater than the third side. And what is the third side? 5.8. Now let's see the next option. 5.8 plus 4.5. अगर हम ये दो साइड को प्लस करते हैं, yes, this is also greater than the third side. And what is the third side here? 10.2. So what we write? Yes, here the triangle is possible. Okay, triangle is possible with the given sides, with the given length of the sides. Okay, now let's move to the next example. Now let's study question number 8. See in the question, in the given figure, you can see here one figure is drawn. In this figure, S is a point on the side QR of triangle PQR. This is side QR. You can see on the side of triangle QR there is a point S. Okay, and you have to prove that PQ plus QR plus PR is greater than 2 times side PS. So you have to prove this PQ plus QR plus PR, sum of all these three sides is greater than 2 times PS. Okay, very easy sum if you know the properties of the triangle, whatever we have studied till now. Let's see. We have one property of inequality of a triangle, that sum of two sides of a triangle is greater than the third sides. So let's consider first this triangle. We will consider triangle PQS. This shaded part consider. Okay, तो इसमें देखेंगे हम, we will write in triangle PQS. Now which two sides sum you will take? Here see, on the right hand side whatever we have to prove, on the right hand side which side is there? PS. तो अब क्या लेंगे? We will take PS on one side. Means what I mean to say, हम लेंगे PQ plus QS is greater than PS. So write in triangle PQS, PQ plus QS is greater than what? PS. Give it number 1. Now what is the reason behind this? We know the reason. Let's write down sum of two sides of a triangle is always greater than the third side. Okay, now similarly, now you see one more triangle is forming here, that this unshaded one. Now we will take this unshaded one of triangle. What is the triangle name? PSR. So write down in triangle PSR. Again, what? PR plus SR is greater than PS. Means PR plus SR is greater than PS. Number 2. And what is the reason? The same reason. I am showing by arrow, but you have to write the reason. That sum of two sides of a triangle is greater than the third side. Okay. Now let's see. From 1 and 2. 1 and 2, or you can write adding 1 and 2. Adding 1 and 2. So you have to add left hand side as well as right hand side. So let's write first left hand side. Add it. PQ plus QS is the left side of first one, plus
second side, left side is what? PR plus SR is greater than PS plus PS. Here on the right side we will get PS plus PS. Now you see in the figure here QS and SR is QSR are collinear points. So let's write QS and SR side in bracket, this QS and SR. So remaining I will write as it is QS, this is PQ plus, let's take this in the bracket, make a pair of these two angle, make a group we will make, okay. And PS plus PS is what? 2PS. Now see in the figure, QS plus SR is equal to what? QR. See how I have written this. Now you can see here, let me draw here. Here is suppose Q, here is S and here is R. So what it shows, QSR are collinear points. Whenever the points are collinear, you can take QS plus SR is equal to QR. Means this side plus this side is equal to this side. So the same we use here. So in place of QS plus SR, what we write now? QR according to the figure. Okay. So let's write here PQ plus what we write? QR in place of this. So QR plus PR is greater than 2 times PS. And here give the reason. What is the reason? QSR are collinear points. And now you check your proof that what is the proof part? What you have to prove? PQ plus QR plus PR is greater than 2 times PS. Hence proved. Okay. And in this way we have proved this sum. The sum is easy, that, and you must know the properties. Here we have used the properties of inequality of a triangle, that sum of any two sides is greater than the third side. Now let's move to question number 9. Question number 9 is also just like question number 8. Okay, only a slight change is there, that here AM is a median of triangle ABC, and again you also have to prove that AB plus BC plus CA is greater than 2 times AM. So let's draw the figure according to the question. See question number 9. Here I have drawn triangle ABC, and what is given to you that AM is a median. So you know what is median? Median is a line segment which is drawn from the vertex to the midpoint of its opposite side. So BC is the opposite side, so M is the median. AM is the median, and again you have to prove AB plus BC plus CA is greater than 2 times AM. So in this question also in the same way we will start. Let me divide this ABC into 2 triangles. You can see this is suppose one shaded one and this is unshaded one. So let's take first shaded one. Any you can take as first. In triangle ABM, you know AB plus BM is greater than AM. And what is the reason? Sum of two sides is greater than the third side. Similarly, now I am going to take, अब मैं unshaded वाला triangle लूँगी बेटा. So you have to mention the name of the triangle ACM. Now in this triangle again, AC plus CM. AC plus CM is greater than what? AM. Give it number 2 and give the reason. Reason is same, this one. Just I am putting the arrow, means you have to write the same reason. Now 1 plus 2, addition of 1 and 2. So add left hand side of 1 and 2. So what we are getting? Let's write is greater than AM plus AM. Now see the figure BM and CM. Make the group of these two. BM plus CM, and AC we can write here. AM plus AM is what? 2 times AM. Now again BM plus MC, or you can say CM plus MB is what? BC. Just I have explained in the previous example. So is in place of this we will write now BC plus AC is greater than 2 times AM. Hence proved. And here you can give the reason PM dash C. Means they are collinear points, and hence what? Proved. Okay. Now let's move to question number 10. Question number 10 is
but if you understand the steps, it will be easy for you. Okay, now let's write question number 10. Question is, calculate the angles of a triangle ABC having 3 angle B is equal to 4 angle C. This is given to you, and also given that the interior angle A is equal to 3/7 of exterior angle A. These two things are given to you, and you have to calculate the angles of a triangle ABC. Now here I have drawn a simple figure. Triangle ABC means you have to find out measure of angle A, measure of angle B, and measure of angle C. According to the question, here one is exterior angle A, so here I have extended this side, AB side of the triangle, and here you are getting exterior angle. See, this is exterior angle of angle A. Now let's start. 3 angle B is equal to 4 angle C हमको दिया है, इसमें से हम B by C का रेशियो निकालेंगे. B by C is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 4/3. ओके, एंड गिव दिस एज नंबर 1. सपोज ये नंबर 1 है. ओके, अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ए दिया हुआ है. सो लेट्स यूज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. व्हाट इज दैट? एक्सटीरियर एंगल ए will be what is the property? That exterior angle is equal to sum of its remote interior. तो exterior angle का remote interior angles कौन से हैं? Opposite interior angles, angle B plus angle C. So here we will write angle B plus angle C. Okay, and give this as number 2. Similarly for exterior angle B. Okay, अब ये एक्सटीरियर एंगल है, सपोज यहाँ से दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ बी. सो एक्सटीरियर एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? सी द फिगर A plus C. So we will write exterior angle B is equal to, what are the interior angles, opposite interior angles? A plus C. A plus angle C. Give it number 3. Now again one more exterior angle we have, what? C. So suppose I will draw the exterior angle from here for C. This is exterior angle for C. So exterior angle C is equal to sum of its opposite interior, that is A plus B. So let's write exterior angle C is equal to angle A plus angle B, and give it number 4. Now for all this, what is the reason? Exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite interior angles. Okay, this reason, the same reason is for everything. Now let's write adding 2, 3 and 4. If we add this, what we are getting? Adding 2, 3 and 4. So what you will get? Let's add left side. So on the left side we will get angle A plus angle B plus angle C. These all are exterior. So let me write like this. Means exterior angle A plus exterior B plus exterior C is equal to. See here what we are getting. This is your right side part of first one. Then second means third one. Second, third and fourth. Now what you can observe children, कि यहाँ पर हमको एंगल A, B, C, A, these are the angles of a triangle. Again C, A, B, these are also the angles of a triangle. Now sum of 3 angles, let's make and show it by underline and here by this. Sum of these angles of a triangle is what? 180. Plus again these are the angles of a triangle. Sum of these angles of a triangle, what? 180. So 180 plus 180 is equal to what? 360. So what you have got? Exterior angle A plus exterior angle B plus exterior angle C is equal to 360, or you can say 2 times 180. Okay. Now ये सम थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर इसकी स्टेप समझिए आपको बेटा तो इट्स वेरी इजी. We have given this also कि interior angle A is equal to 3/7 of exterior angle A. So let's write that
So write down now interior angle A is equal to 3/7 of exterior angle A. यहाँ पर लिख देंगे given. This is given. Now see the figure. फिगर देखेंगे हम. इंटीरियर एंगल ए और एक्सटीरियर एंगल ए की बात चल रही है. तो इंटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ए ये क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है ना, लीनियर पेयर. एंड वी नो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज व्हाट? 180. तो अब हम वो यूज़ करेंगे कि इंटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट? 180. एंड रीजन इज व्हाट? लीनियर पेयर एंगल. ओके, नाउ दिस इज इंटीरियर एंगल ए. इंटीरियर एंगल ए की वैल्यू क्या दी हमको कि 3/7 ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए. तो अब ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे इंटीरियर एंगल ए की जगह. अब यहाँ पे लिखेंगे 3/7 ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए प्लस, और ये ऑलरेडी एक्सटीरियर एंगल ए है, इज इक्वल टू व्हाट? 180. ठीक है, ये गिवन था. अब देखिए दिस इज़ ए फ्रैक्शन. ये क्या बन गया अपना? फ्रैक्शन. अभी आपको सिंप्लीफाई पे ध्यान देना है. कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम? दिस इज़ 3/7 ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए. यानी अगर मैं रफ में लिखती हूँ, मान लो ये 3/7 ऑफ एक्स प्लस एक्स है, ये मान लो. ओके, इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन सी. तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन हो गया, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. एंड व्हाट इज LCM? 7. सो इन द सेम वे हियर व्हाट इज LCM? 7. Here already the denominator is same, so numerator will be as it is. So 3/7 of exterior angle A plus, यहाँ पर क्या बचेगा? सॉरी, LCM क्या हुआ अपना? 7. So here in the numerator what we have? 3 exterior angle A. 3 exterior angle A. Numerator as it is. और यहाँ पर exterior angle A यानी जिसको हमने x माना था इसके नीचे 1 है. तो अब ये 7 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी 7 से, तो 7 into x हो गया. ठीक है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा 7 exterior angle A is equal to 180. अब जैसे 3x प्लस 7x इज इक्वल टू 10x होता है, वैसे ही 3 एक्सटीरियर एंगल ए प्लस 7 एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 एक्सटीरियर एंगल ए अपॉन 7 इज इक्वल टू 180. अब यहाँ से सिर्फ हम एक्सटीरियर एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे, बाकी सब ट्रांसपोज करेंगे. तो क्या मिलेगा आपको? एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू 180 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10. सिंप्लीफाई करो, 0 0 कट गया. 18 इंटू 7 होता है 126 डिग्री. तो अब देखिए आपको एक मेजर मिला है कि एक्सटीरियर एंगल ए का मेजर क्या है? 126 डिग्री. ओके, नाउ अब हमको मेजर मिल गया है एक्सटीरियर एंगल ए का 126. लेट्स चेक द फिगर. अब हम फिगर में देखेंगे, फिगर में क्या है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल, ये हमको कितना मिल गया? अब नाउ वी गॉट दिस एंगल एज 126. अब हम देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. एंड वी नो सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180. तो हम ये इंटीरियर एंगल है ए का और ये एक्सटीरियर एंगल है. तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180. समझ रहे हो? क्योंकि ये कौन सा फॉर्म कर रहा है? ये लीनियर पेयर बन गया. हमारे पास ये है तो हमको इंटीरियर एंगल ए मिल जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ABC मिल सकता है. ओके, सो लेट्स राइट दैट. तो अब हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ए प्लस एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू 180. ये क्या फॉर्म किया? लीनियर पेयर एंगल. ठीक है, अब इंटीरियर एंगल ए तो हमको मालूम नहीं है, सो इट विल रिमेन एज इट इज़. एक्सटीरियर एंगल ए अभी मिला हमको 126 इज इक्वल टू 180. अब इंटीरियर एंगल ए का मेजर मिल जाएगा हमको 180 माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू वॉट? If we subtract you will get 54 डिग्री.
अब हमारे पास एंगल ए का मेजर आ गया है. ओके, नाउ सी वी हैव, अब हमको बी और सी भी निकालना है ना. सो लेट्स सी हियर, हमारे पास एंगल, एक्सटीरियर एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस सी है. ये देखिए फिगर में. और आप अपना सेकेंड पॉइंट देखिए. सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा था ना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बी प्लस सी. सो नाउ लेट्स यूज दैट. एक्सटीरियर एंगल ए कितना है? एक्सटीरियर एंगल ए यहाँ पर हमको मिला था 126. तो हम ये यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास अवेलेबल है दैट वी यूज़. अब बी इजियर यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी. नाउ हियर 126 विल बी एज इट इज. इन प्लेस ऑफ बी यू कैन राइट 4/3 एंगल सी एंड प्लस दिस सी इज ऑलरेडी देयर. अब ये कैसे आया? देखो ये भी गिवन है. फ्रॉम 1 यू कैन सी हियर, सी योर 1. हम अपना 1 देखेंगे. हमारे पास b बाय सी इज इक्वल टू 4/3 है. अब यहाँ से मुझे मान लो सिर्फ एंगल b चाहिए, तो यहाँ से एंगल b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/3 इंटू एंगल c. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. तो सपोज दिस इज 1 and now let's use that here and write. So this only I have used, and again this is a fraction 4/3 angle C plus angle C. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, so what we get 126 is equal to, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 angle C plus 3 angle C by 3. Okay, let's simplify here. आफ्टर दिस आई हैव पुट हियर एरो, यू हैव टू सी हियर. ओके, तो ये यूज़ करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 126 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 एंगल सी प्लस 3 एंगल सी इज इक्वल टू 7 एंगल सी. एंड एंगल सी सिर्फ निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 126 इंटू 3 और ये 7 इधर नीचे आ जाएगा. ओके, एंड नाउ यू सिंप्लीफाई. So here when we simplify, here you will get 18, and 18 into 3 is what? 54. So therefore angle C is equal to क्या मिल रहा है आपको? 54 डिग्री. आपके पास C भी आ गया है, आपके पास एंगल A का मेजर भी आ गया है. ठीक है, A भी 54 आया और C भी 54. नाउ लेट्स फाइंड एंगल B. B is remaining ना. नाउ चिल्ड्रन, वेरी वेल वी नो दैट एंगल A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180. दिस इज विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी. ओके, नाउ अपन के पास एंगल ए है. एंगल ए का डिग्री क्या आया? 54. एंगल बी हमको फाइंड आउट करना है, सो लेट्स राइट एज इट इज. सी ऑल्सो यू हैव 54. ओके, इज इक्वल टू 180. नाउ सिंप्लीफाई. एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 प्लस 54 क्या होता है? 108. 108 इज इक्वल टू वॉट? 72 डिग्री. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, हियर द सम ओवर. what is the measure of? You have to find now. You have to calculate the angles of a triangle ABC. So angle A is equal to 54, angle B is equal to 72, and angle C is equal to 54 degree. So children, in this way we have completed our exercise. Which one? 12.2, which is based on the properties of exterior angle, property, median of a triangle, and inequality of a triangle. ये सभी properties हमने use किए हैं. So I hope कि you understood all the properties and learn it very well, and you must know how to use this properties in the examples. तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बेटा ये सारे सम्स और प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे. इसी आशा के साथ आपसे लेती हूँ मैं अलविदा. गुड बाय, बाय बाय.